वो कोई स्क्रीन भी करनी है। ये इनका ये करना जरा कुछ ऐसे कर दो ग्रुप में जगदीश को बोलना है ज्वाइन करना, व्हाट्सएप किया है जूम मीट पे ना। Good morning, Dr. Arun. Am I audible there? Yeah, you are audible. Hello. You are audible. Am I audible? Yeah. You are audible, Dr. Jagdish. Okay, fine. So I'm ready. Should I share my presentation meanwhile? Yeah, you can share. Okay.
आ जाओगे ना किसी को भेज सर, हम चले जाएंगे ना रीना हाँ आप जाए सर, आ जाओगे ना? Is my screen visible there? Presentation? Yeah, your screen is visible. So, let me introduce Dr. Jagdish. So, first of all, I would like to thank Dr. Jagdish for being with us for this workshop. And Dr. Jagdish is currently working as an associate professor in the Department of Computational Sciences in Central University of Punjab, Bathinda. He has also served in Department of Physics and Astronomical Sciences, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala for 10 years. 2 students have been awarded PhD thesis under his guidance, and 1 student has submitted a thesis. He has published more than 25 papers in journals of international repute. He is currently working on computational material science with special focus on superconductivity, superconducting materials, 2-dimensional energy harvesting materials, hydrogen storage and water splitting, and he has done his PhD from National Physical Laboratory, Delhi. So now I request Dr. Jagdish to please deliver his talk on quantum theory of materials. So please, Dr. Jagdish. Recording started. Okay. Good morning, everyone, and I am thankful to Dr. Arun and the whole organizing team for this opportunity to share some ideas on whatever I am doing with the young minds of Bilaspur. In fact, I am missing to be there. It's my hometown, in fact, and I would have loved to be there, but because of some unavoidable circumstances, I could not join you offline. But okay, I'll be visiting some other time there and interact with the students offline as well. Now, let me start with the let me start with the presentation on the topic, which is quantum theory of material. And since this is a workshop, I have tried to be very basic and try to establish a connect between what you do in your it's mainly for the students. I believe that most of the participants are PG students and maybe some PhD students. So basically, most of the times what happens is that whatever we are doing, we have studied in our classes like quantum mechanics, solid state physics, condensed matter physics, statistical mechanics. All these subjects we study separately and we miss a connect. And when we try to come to research, and what we do is we feel that though we are usually unable to connect the concepts and we can't do the things in a better manner. So here I have tried to do or establish a connection between the various concepts and the topics which we study and how they are related to the workshop and to the topic of materials. So just a moment, I think, just a minute. This top bar is, okay, I can continue this way. So first thing is why materials, because I think this workshop is all on materials and you might be listening on materials from a lot of, from many speakers. So why materials, first thing. So I think I don't need much efforts to justify that why materials are important. We can see materials in every domain of our life
right from the area of electronic gadgets to smart transportation or energy harvesting systems. And even there are many sophisticated technologies which can be used for diagnosis in various areas, medical science being one such area, and many experimental research on cutting edge questions like what are the most fundamental particles in nature. This figure, I don't know if you can see my cursor. Is my cursor be visible to the part on your screen? Is the cursor visible there or not? Okay, let me use laser pointer. I think this will be visible. So, for example, this slide is trying to highlight how people are trying to answer the questions like what is the most fundamental particle in nature. So ultimately there also people require a lot of sensors, different smart materials which can pick the data from outcome of an experiment and then try to interpret those results. So materials are everywhere. I mean, we can't really ignore role of material in any kind of development which we are seeing around us. So ultimately, all those smart sensors, gadgets, everything is made up of materials. They are made up of certain materials. So if we try to look at material, so what a material is actually, it is nothing but something which is made up of arrangement of atoms, different types of atoms. Now depending upon what type of atom, what type of combinations, we have different types of materials. So a material basically in general, suppose we are doing or going to do some research or trying to develop some new modern material or some gadgets, some sensors for example, we need to first understand which material is suitable for that. And sometimes we need to design smart materials. So basically to understand materials, there are two broad categories which can really study materials. The first category is experimental way of studying the materials, and experimental study of materials demand huge budget, but of course that is important also. And then you can study the materials by doing certain experiments on them, like trying to detect their structure using X-ray diffraction, try to study their resistivity, maybe some low temperature measurements, specific heat, something like that. These are different properties which are very relevant for using a material in a particular application. So that's an experimental way. But the problem with experimental way of studying material is that it's a very expensive thing. I mean, you have to spend crores of rupees to understand and establish the experimental setup for study of materials. Second way is very important and very popular as well as very economic, which is theoretical way of studying the material. So theoretically, every material can be seen to be made up of atoms, and an atom can be seen to be like some nucleus and electrons around it, right? So for a material scientist, we don't bother about what is happening inside the nucleus. For a material scientist, we are only taking nucleus as a point particle which is positively charged, and electrons around the nucleus are revolving, and they are playing the main role in deciding properties of a material. So then question comes, what governs the dynamics of constituents of a material? So ultimately, theoretically, if you pick any system, then theoretical understanding of a system means that what are the constituents of that system and how the constituents are behaving among themselves. These are two crucial questions. If we could answer, we can really predict how a particular system is going to behave. For example, if I take your class, any class of students, and if I want to try to really come up with an answer to the question how that particular class is going to perform, how that class is going to behave, then I will really look at the constituents, mean the students of the class, and then based upon what kind of students they are, how they are interacting with each other, then accordingly I can to some extent predict how the class is going to behave. Same is the idea here, means we try to look at the constituents and their interaction, and based upon that we can really predict how a material is going to be. So what
governs the interaction, or I mean, what is the rule which these constituents follow? So I think you would have done in your classes on quantum mechanics that if you have materials or if you have a system, yeah, Dr. Arun, or somebody is trying to say something? Is everything fine? I mean, am I audible there? Things going smooth? Or any question or? Yeah. Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. So, I hope you are getting. If anyone has any question, you can unmute your mic and ask. So basically, quantum mechanics is something which governs. Why quantum mechanics comes into picture? Because the particles which we are dealing with are tiny, and interparticle separation for the in the system is comparable to their de Broglie wavelength. So whenever the particles are separated by a distance which is comparable to their de Broglie wavelength, we have to treat that system quantum mechanically. So that's where the first part of our my title comes into picture. Quantum theory means why we need a quantum theory, because in any material the constituent particles are smaller in size and have significant de Broglie wavelength, and interparticle separation is comparable to their de Broglie wavelength. That is why we can't get away without doing quantum mechanics or quantum theory. And in quantum theory, what we need Schrodinger equation. Of course, I hope you all are familiar with the Schrodinger equation, H psi equals E psi. So now in the coming parts of my slides, what we will be focusing on, how to solve this Schrodinger equation for a material. Material means group or collection of atoms. That's what we want to focus. And we will be limiting ourselves to the crystalline materials where atoms are periodically arranged. They have a well-defined periodic arrangement, well-defined pattern. So that's what we are interested in. In case of other materials like amorphous materials, liquids, gases, the things become little complicated. That's why we can't do their quantum theories so easily, right? So we won't be getting into that. Our main focus will be on periodic materials. So basically, let us try to have a look at what is the Schrodinger equation, or how does this Schrodinger equation look like. I'm sure you would have seen this time-dependent Schrodinger equation. This part is time-dependent term, and on the right-hand side you have various. This is kinetic energy part, and this is potential energy part. In principle, if you have many particles, you have to do summation here. You have to put in summation here. Oh, sorry, just a minute. You have to put summation here for the particles if we are really going to look at many particle system. In compact form, whenever we are not dealing with the time dependent potentials, or even if you have to deal with the time dependent potential, what we do is we first solve time independent Schrodinger equation. Means we first solve the right hand side, then taking what we are getting on the right hand side as a parameter or as a number, we try to solve respective time dependent thing. So time independent Schrodinger equation is a crucial starting point. So we have to solve time independent Schrodinger equation multiple times, and it's a starting point, we can say. And in the cases where potentials are not time dependent, then of course again we have to go for time independent Schrodinger equation. So that's what is our you can say elaborated and compact form of the Schrodinger equation. Now let us try to look at this Schrodinger equation for real materials. This you would have done in quantum mechanics, Schrodinger equation and how it looks like. Now how this Schrodinger equation relates to materials. Let us try to have a look at this. So any material, this is just a schematic representation of different types of materials which exist in nature. So any material is nothing but arrangement of atoms in some structure. So how does the Hamiltonian for such a material looks like? It looks something like this. In fact, it's much more, there are certain parts which I have not shown here, but yeah, you can put them also. So this is the Hamiltonian. The first part
this is now where that summation I was talking about has entered. Summation, suppose our material has n number of electrons and maybe capital M number of nuclei, because each nucleus, say this is a atomic atom, so atom has a nucleus and some electrons around it. So suppose there are m such nuclei and n such electrons. So basically Hamiltonian has to be kinetic energy plus potential energy. That's how we write Hamiltonian. And in that case, this is the kinetic energy of all the electrons, means this is quantum version of kinetic energy in the operator form. This is interaction of electrons with atomic nuclei. I'll be talking about these terms in detail. This is electron-electron interaction energy. Two terms which are not here, which is like kinetic energy of nuclei. Kinetic energy of nuclei and nucleus-nucleus interaction energy, which is not there. Nucleus. So, what is kinetic energy of nuclei? It is going to have similar form with summation over, say, j running over 1 to m. If we have m number of nuclei, and this here we will replace this with the mass of nucleus, say ith nucleus or jth nucleus, and this gradient has to run over coordinates of atomic nucleus. And nuclear-nuclear interaction is energy is similar, where we have to replace that with Z1, Z2. Suppose Z1 is the charge on first nucleus, Z2 is the charge on second nucleus, E square over same thing, I mean R1 minus R2 if we have first and second nucleus. In general we can call Zi, Zj, so Ri, Rj, something similar to this. Now this type of Hamiltonian is really very complicated to solve. If you would have done some problems in quantum mechanics, you would realize that it's not really easy to solve. If you see one of the problems, one of the very fundamental and basic problem which students are... This meeting is being recorded. Okay. So one of the very basic problem is a particle in a infinite square well potential that can be solved analytically very easily. When you try to go to more complex problems like hydrogen problem, then you would have realized that it require really a good mathematical skills to solve hydrogen problem. You have to go to special functions, solving those special equations, differential equations, and then hydrogen atom is also another simplest version of any material. It is the simplest atom in nature. Now, when we are trying to study materials which are made up of complex atoms like carbon, sodium chloride, different types of atoms, then this Schrodinger equation is very complicated and it is almost impossible to solve this equation analytically. It means we can't solve it theoretically in complete manner. So that is why we try to, we need to actually start with many approximations. I hope you would have heard of these approximations in the previous few lectures during this workshop. So basically by employing these approximations, we are trying to simplify the Hamiltonian for a material, and that's what leads us, or which takes our problem, which is impossible, to something which can be solved. So first is Born-Oppenheimer approximation. So in Born-Oppenheimer approximation, what we do is we have some Schrodinger equation, and actual wave function is a wave function which is a function of rather coordinates of atomic nuclei, and these are the coordinates of electrons. So I'm writing capital X, but capital X contains the information of all the atomic nuclei, say x1, x2, x3, or you can say whatever. So this is a shorthand notation of coordinates of all the atomic nuclei. Small x represents the coordinates of all the electrons. Again, it is shorthand notation for the coordinates of all the electrons. So Born-Oppenheimer approximation, what we do there, actual wave function is something like this, which I have shown here. So in Born-Oppenheimer approximation, what we do is we try to simplify this, and the logic behind Born-Oppenheimer approximation is that electrons are very light and they can move very fast in comparison to atomic nuclei. Hence, we can decouple their motion. Means electrons, electronic degree of freedom can be decoupled from nuclear degrees of freedom. So that is why actually what we can do is we can write down this wave function as the product of nuclear quantum wave function plus
electronic part of the wave function. This is something similar to the separation of variable, which you usually do in your Schrodinger equation. When you would have solved three-dimensional Schrodinger equation, then you would have seen such kind of variable separation. Means there we used to have a wave function, which is a function of say x, y, and z. What we do there, we try to write it like product of x component, product of y component of wave function, and same thing here, because x, y, z are independent. So we are saying here nuclear coordinates are almost independent of electronic degrees of freedom, so we can write down the total wave function as product of the two, and this does a great simplification to us. Same thing, same trick which we apply for separation of variable, we will apply here. I am not getting into the details, but yes, by applying same trick, we can split this equation, the complicated Schrodinger equation, which contains the coupled wave function, into two components. One component, if you see this part contains only the electronic wave function. This part contains only the nuclear part of the wave function. Same thing which happens in variable separation in 3D Schrodinger equation. So then what we say? We say that, okay, we have two parts. One part, I mean, we can take this to the right hand side. Then we can say the left hand side is totally dependent on capital X, right? And left hand side depends on capital X. That is the nuclear coordinates. Right hand side depends on small x. Capital X is sitting here, but it is sitting as a parameter. Means the nuclear coordinates are taken as numbers coming from the structure. They are not variables here. They are parameters. Okay, so I hope you can, after a little thinking, or we can discuss this after completion of this lecture. What does it mean if there is any confusion? So the left side is just function of x, right side is function of small x. So how is it possible? It is only possible if these are equal to certain constant thing, right? This is what we do in the Schrodinger equation. So that is why we put it to be something like, if we take this thing to the right hand side, so this whole thing, we say this is equal to E minus E nuclear. This part is nuclear energy, or we call it as E nuclear. Then this is nothing but electronic energy. Right hand side with this component, this part coming here, this becomes this thing. So ultimately this part becomes nothing but a Schrodinger equation for electronic part. Means by employing Born-Oppenheimer approximation, what we can do is we can actually separate the electronic Schrodinger equation and nuclear Schrodinger equation. And for nuclear part, we don't need quantum mechanics actually, because the particles are heavier, bigger, and their de Broglie wavelengths are smaller. So we can neglect their quantum effects. So they can be solved classically. That's what is the idea. So only thing which requires quantum mechanical treatment is electronic part of the Schrodinger equation. That's the important simplification done by the Born-Oppenheimer approximation. So the Hamiltonian which we are left with is only this one for any material. So here we have two components, three components, as I told you. This is kinetic energy of the electrons. I have not written it, but I am saying it exclusively. This is electron nuclei potential energy, and this is electron potential energy. I think terms are very simple. Coulomb interaction it is. So of course this term is more complicated and needs approximation, but since we are doing density functional theory, you are talking of material modeling. So there are two components, two major components in a material, two types of interaction which needs to be taken care. First is this part, the electron nuclei potential energy and electron potential energy. So most of the times when people are talking of DFT, they talk about electron-electron interaction energy. This is what is done via DFT, density functional theory. And most of the times people talk of this only. You wouldn't find out people talking of electron nuclei interaction energy. But any DFT code is taking care of electron nuclei interaction as well as electron interaction. Any DFT code is most perfect description of a material. So it has both electron interaction as well as electron nuclei interaction. So in few slides I will give you a quick overview of first part first. Then DFT, I think some people would have talked to you. I will quickly jump through that.
first part I will be summarizing here, which you would have done in some course on solid state physics, in condensed matter physics. What is this electron nuclei potential energy and how to deal with this? And as I told you in the beginning, we are focusing on crystalline materials. So we are just trying to focus on first how to take care of interaction of electron with atomic nuclei. And for that, we are totally ignoring the interaction of electrons among themselves. वो हम बाद में, we do it separately. We do it separately for or by using DFT. So first part is how to incorporate electron nuclei interaction. So इसका simplest version है free electron theory. I mean उस free electron theory I think आपने solid state physics में पढ़ा होगा या condensed matter physics में शुरुआत में ही पढ़ाई जाती है. That okay, I mean there what we try to do is we try to write that Hamiltonian which contains many terms. We try to neglect everything sitting here. We neglect this everything and only keep this part. So that is called free electron theory, as if electron is free. There is no interaction at all. This theory was proposed by Sommerfeld. And I think these are some of the basic predictions of Sommerfeld theory. This is how E versus K. And this is band structure. I hope you all would have gone through band structure in previous classes. This is the simplest band structure, you know. So किसी भी material का simplest material का band structure क्या होगा? Free electron theory के हिसाब से it has to be parabolic. So parabolic dispersion होना चाहिए. Most of the metals show this, but there is a deviation of course from parabola. If there is a deviation from parabola, इसका मतलब क्या है? कि भाई of course free electron theory तो नहीं है, free electrons freely तो नहीं है, तो they must deviate. So deviation doesn't mean failure of this, of course. It is a failure, but means there are some interactions sitting which we have ignored in our free electron theory. उसकी वजह से ये होता है. Then we define, ये चार्ल्स किटल की किताब में आपको मिल जाएगा या एशक्रॉफ्ट मर्लिन की बुक में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आप पढ़ सकते हैं. तो वहां से हम डेंसिटी ऑफ स्टेट भी कैलकुलेट करते हैं. ये डेंसिटी ऑफ स्टेट फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से e raised to the power half टाइप होती है. Let me clear the jump from the screen. ठीक है. So it is e raised to the power half type. So DOS should look something like this. If this is E, this is D of E. तो ऐसे आपका ये दिखनी चाहिए. So ये free electron theory. Now if you do DOS calculation in any DFT code, it looks something like this. So what is the deviation or what is the reason for deviation is various interactions which are there for a material. So free electron theory के हिसाब से ऐसी होनी चाहिए. Then people said, okay, free electron theory तो sufficient नहीं है. What is the other way out? People talked about nearly free electron theory, जहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई periodic potential incorporate करते हैं और periodic potential हालांकि तो कूलम टाइप होगा इस तरह का. ये किटल से मैंने लिया है. These are your atomic nuclei, and this is how the potential is going to look like. 1/r type potential है ये वाला. ये these are periodic potential है और so 1/r type potential है. So as r goes to 0, potential sharply approaches to infinity. तो इस तरह का है, बट हम 1/r ना लेके नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पीपल सेड लेट अस टेक ए पोटेंशियल ऑफ दिस टाइप. दिस हैज ए पीरियोडिसिटी a. अगर आप एक फंक्शन देखेंगे cos ऑफ 2 pi x by a, तो इसकी पीरियोडिसिटी a आती है. यू कैन वेरीफाई इट. किटल से ये मैंने लिया है. And there people try to calculate the gap. So this comes out to be the band gap. I'm not getting into details of this, but yeah, free electron theory के हिसाब से band structure ऐसा था. Nearly free electron theory में what happened is at Brillouin zone boundary. I hope you have done something on Brillouin zones as well. So at zone boundary एक gap open up हो जाता है. वो हर एक उसमें gap होगा zone boundary पे. अब आप कहोगे भाई based upon the band gap, a material is semiconductor or metal. तो अगर हम कह रहे हैं nearly free electron means whenever there is a periodic potential on an electron, there is a gap at zone boundary. Yes, there should be a gap at zone boundary. And the magnitude of the gap is equal to first Fourier coefficient of this periodic potential. तो गैप होता है तो क्या हर एक मटेरियल सेमीकंडक्टर होना चाहिए या इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि सब में तो गैप होगा जोन बाउंड्री पे. So no, actually no. Whether material is going to be metal or semiconductor depends upon where is the Fermi level in the material. So there is something called Fermi energy. So what you do is, I hope you have done it here. यहाँ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है, आप उसको पढ़िएगा.
So when you calculate the Fermi energy, if Fermi energy lies somewhere in between, this is called a band. This we can call the valence band, and this is we call conduction band. So basically, if the Fermi energy is here, okay, then you can see there are states near Fermi level. So this is a metal. That material is going to be metal. If the Fermi level lies here, when a particular band is completely filled and next band is available only after a gap, मतलब एक completely filled band और जो अगला अवेलेबल बैंड है उसके बीच में गैप है, तो उस मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना गैप होगा. सो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में माना जैसे ही आप पीरियोडिक पोटेंशियल इनकॉर्पोरेट करते हो तो क्या होता है, एक गैप ओपन अप हो जाता है आपके बैंड डिस्पर्शंस में जोन बाउंड्री पे, और वो गैप कितना है और फेर्मी लेवल कहां पे है उसके हिसाब से आपका मटेरियल सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर होगा, डिपेंड करेगा कितना गैप का वैल्यू है. और अगर फेर्मी लेवल बैंड के बीच में आता है तो वो मेटल होगा, बिकॉज देयर आर स्टेट्स नियर फेर्मी लेवल. ओके, देन ब्लॉक केम इन 1928 विद दिस वेरी पॉपुलर थ्योरम, ब्लॉक थ्योरम. आई थिंक ये काफी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को. ब्लॉक थ्योरम के बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा, बिकॉज टीचिंग ब्लॉक थ्योरम इटसेल्फ रिक्वायर्स 1 आवर. उसमें नहीं चलेंगे, मैं आपको सिग्निफिकेंस उसका बताऊंगा. सो बेसिकली ब्लॉक ने क्या किया कि पीरियोडिक फोरियर सीरीज लिखी उसने, और व्हाट ही फॉलोड इज व्हाट वी कॉल बॉर्न, लेट मी बॉर्न करमैन बाउंड्री कंडीशंस लगा के उसने पीरियोडिक क्रिस्टल के लिए वेव फंक्शन लिखा बाय यूजिंग फोरियर सीरीज. सो बेसिकली ये कंडीशंस क्या हैं? इन प्रिंसिपल योर क्रिस्टल इज समथिंग लाइक दिस. 1D क्रिस्टल की बात कर लेते हैं. सो इट हैज सम एंड पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड एजेस ऑफ द क्रिस्टल. एजेस हैं व्हाट Born-Karman boundary condition say, let's get rid of edges and assume our crystal to be of infinite size. Infinite होने का तो practically possibility नहीं है. So people proposed a cyclic model. Means whatever be the wave function here, say at x equal to 0, is same as the value of wave function at x equal to L, L being length of the crystal. तो वेव फंक्शन यहाँ पे और यहाँ पे सेम है. सो एक तो पीरियोडिसिटी ऑफ एटम्स है, एक पीरियोडिसिटी ओवर द लेंथ L ऑफ द क्रिस्टल आ जाती है कि भाई ये पूरा क्रिस्टल भी रिपीट कर रहा है इनफाइनाइटली. ठीक है, तो उस पीरियोडिसिटी की वजह से आपके पास ये जो वेव फंक्शन है वहां पे एक स्मॉल k वेव वेक्टर एंटर करता है. ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आई होप आपने पीजी में पढ़े होंगे ये, और कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कंफ्यूजन भी रहता है, तो कभी अगर मौका लगेगा तो ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा. सो k एक्चुअली इज इक्वल टू जैसे 2 पाई बाई L आता है स्मॉल k, एंड देन यू डिफाइन समथिंग लाइक 2 पाई बाई a. दो चीजें हैं, ये आपका क्या आता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर. k इज द वेव वेक्टर जो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, वो 2 पाई बाई L बॉर्न-करमैन बाउंड्री कंडीशन से वो एंटर करता है. ठीक है, खैर ब्लॉक ने क्या किया, मेन मुद्दा क्या है ब्लॉक का, जो मेन गेन जो था या मेन अचीवमेंट जो था इसका ये था कि भाई आप पूरे क्रिस्टल में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय, पूरे क्रिस्टल में सॉल्व करने की बजाय आप क्या करो, एक यूनिट सेल में ही देख सकते हो ना, बिकॉज वेव फंक्शन एवरीवेयर एल्स कैन बी रिटन फ्रॉम द वेव फंक्शन इन ए पर्टिकुलर यूनिट सेल. तो अगर यूनिट सेल में ही वेव फंक्शन से बाकी यूनिट सेल का वेव फंक्शन आप बता सकते हो, तो भाई लेट अस सॉल्व फॉर द वेव फंक्शन इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, एंड बाहर वाली यूनिट सेल में ब्लॉक थ्योरम का इस्तेमाल करके आप वेव फंक्शन लिख सकते हो. दैट्स व्हाट इज द आइडिया. सो दैट इज व्हाट enables us to solve the Schrodinger equation only for a particular unit cell, and if you can solve Schrodinger equation for a particular unit cell, then we can obtain the wave function for the full crystal wave function. यूनिट सेल वेव फंक्शन से आप निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग ब्लॉक थ्योरम. वो उसका जो था मेन अचीवमेंट था. ठीक है, क्रॉनिक पेनी मॉडल जस्ट एक टॉय मॉडल की, अच्छा भाई नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन या ये तो बहुत ही सिंपल से पोटेंशियल्स हैं. क्रॉनिक पेनी मॉडल में उस पोटेंशियल को, मींस द पोटेंशियल व्हिच इलेक्ट्रॉन्स फील इन ए
क्रिस्टल, उसको थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश की गई, थोड़ा और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई. दिस मॉडल केम इन 1931. अगर आप ये क्रोनोलॉजिकली समझोगे ना इवेंट्स को, सो दे केम ऑलमोस्ट विद इन अ गैप ऑफ 2-3 इयर्स. इसका मतलब वो जो डेवलपमेंट्स थी वो कंटिन्यूअसली चल रही थी और लोग इंप्रूवमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल करते जा रहे थे. ठीक है. तो 1928 में ब्लॉक ने ब्लॉक थ्योरम किया. तो क्रॉनिंग-पेनी मॉडल में ब्लॉक थ्योरम का इस्तेमाल करके उन्होंने पीरियोडिक पोटेंशियल ऑफ ए स्पेसिफिक शेप, इस तरह का पीरियोडिक पोटेंशियल, टेक्स्ट बुक्स में आज आपको पढ़ाया जाता है ये, इस तरह का पीरियोडिक पोटेंशियल लेके उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया. ये पीरियोडिक पोटेंशियल कहीं भी व्हाट यू कैन कॉल कूलम पोटेंशियल की तरह तो नहीं दिखता है, बट यस सिंपल साइनोसॉइडल जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन में लिया था उससे तो बेहतर ही है. और जब आप क्रॉनिंग-पेनी मॉडल सॉल्व करते हो तो इसको अगर आप स्पाइक्स ले लेते हो ऑफ वेरी स्मॉल विड्थ, तो वो कहीं ना कहीं एक कूलम पोटेंशियल की तरह दिखने लगता है. ठीक है. बिकॉज कूलम पोटेंशियल भी तो स्पाइक्स ही है ना, 1/r टाइप स्पाइक्स हैं, डीप स्पाइक्स. तो इसको आप इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हो, कूलम पोटेंशियल को आप इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. But of course this is a very oversimplification, but yeah, improvement to what we have done previously. So क्रॉनिंग-पेनी मॉडल कैसे सॉल्व करते हैं अगेन इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, बट यस वहां से आपको ये गैप की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी और बेहतर तरीके से पता चली. बाकी E वर्सेस K कैसा आता है वो क्रॉनिंग, आई रेकमेंड यू टू गो टू ए बुक बाय लिबॉफ, क्वांटम मैकेनिक्स की किताब है लिबॉफ की. अरुण सर आपको ऑथर का पूरा नाम बता देंगे, लिबॉफ. उसमें क्रॉनिंग-पेनी मॉडल बड़े अच्छे से सॉल्व किया है, न्यूमेरिकली कैसे आप निकाल सकते हैं ये बैंड स्ट्रक्चर, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. सो क्रॉनिंग-पेनी मॉडल वाज एन इंप्रूवमेंट टू दिस. देन केम सेल्यूलर मॉडल. ये एशक्रॉफ्ट मर्मिन की किताब में मिलेगा आपको, ये सब ये डिटेल में दिया है उसमें, एशक्रॉफ्ट मर्मिन की बुक में. सेल्यूलर मेथड में लोगों ने क्या कहा कि भाई अच्छा, ब्लॉक ने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया भाई, एक यूनिट सेल में ही आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो बाकी जगहों पे आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी ब्लॉक थ्योरम से. तो हाउ टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल एंड देन एक्सटेंड इट टू फॉर ए क्रिस्टल, दैट्स व्हाट वाज डन विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलर मॉडल. नाउ दिस हैपेंड इन 1933 है ना, 31 में क्रॉनिंग-पेनी मॉडल आया. तो जस्ट एक दो साल के बाद लोग छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स कर करके एक बेहतर डिपिक्शन ऑफ द पोटेंशियल फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल प्रिडिक्ट करते रहे, धीरे धीरे कैलकुलेशंस करते रहे. बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो आप करना चाह रहे हो एकदम से हो जाए, कभी कभी 1-2 साल लगते हैं, कभी कभी 10 साल भी लग सकते हैं, 20-50 साल भी लग सकते हैं. सो साइंस गोज दिस वे ओनली, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. ठीक है. एंड समटाइम्स ए इंप्रूवमेंट मे बी वेरी स्मॉल, बट ओके, even a small improvement can be a great step for something coming bigger. और जरूरी नहीं है कि हर चीज आपने ही करनी है, हो सकता है आपने एक छोटा सा स्टेप दिया और किसी दूसरे व्यक्ति ने उस स्टेप का इस्तेमाल करके कुछ आपसे भी बेहतर करके दे दिया. बिकॉज दीज ऑल आर जायंट्स ऑफ फिजिक्स. ये जो आप नाम सुन रहे हो, एशक्रॉफ्ट मर्मिन, बिगनर एंड सीड्स, है ना, या फिर ये जो क्रॉनिंग-पेनी, वो सब बहुत बड़े बड़े लोग थे, बट उन्होंने भी छोटी छोटी चीजें अपने एंड पे करी. एक ही व्यक्ति से हम ये नहीं कह सकते कि वही सब कुछ करके दे देगा, राइट? सो एवरी वन ऑफ अस हैव टू गिव और कंट्रीब्यूट स्मॉलर पोर्शन फ्रॉम आवर एंड, देन समबडी एल्स मे यूज दैट स्मॉलर पोर्शन एंड डू समथिंग मोर बेटर देन इवन व्हाट वी आर डूइंग. सो दिस इज हाउ थिंग्स प्रोग्रेस इन साइंस. एनीवे, सो सेल्यूलर मॉडल में वही आइडिया रहा कि भाई they took the potential inside the unit cell to be radial type wave function, 1/r type. अब ये कूलम टाइप पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगे और उन्होंने कहा भाई पोटेंशियल को 1/r टाइप, Vr मींस 1/r टाइप ले लेते हैं. 1/r टाइप ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम क्या बन गई? हाइड्रोजन प्रॉब्लम की तरह बन गई. हाइड्रोजन प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. देन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए क्रिस्टल बिकम्स इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग हाइड्रोजन प्रॉब्लम. Then question is क्रिस्टल कहां से आया पिक्चर में? ये तो हाइड्रोजन प्रॉब्लम ही होगी. मींस योर यूनिट सेल सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन लाइक पोटेंशियल, मतलब हाइड्रोजन प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहे हैं आप. क्रिस्टल कहां से आया? सो क्रिस्टल एंटर्स इनटू पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ बाउंड्री कंडीशंस.
which are nothing but the block conditions, block like wave function. So आप कहोगे कि हाइड्रोजन वेव फंक्शन है which follows the block like boundary conditions. तो वो करके आपकी क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चर में आ जाती हैं. So that's what is the idea behind the cellular method. और भी बहुत सारे improvements हुए, muffin tin potential, Ashcroft-Mermin again, I refer you to that. Ashcroft-Mermin में आप देख लीजिएगा. इस पार्ट में मैं थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूँ बिकॉज डीएफटी पार्ट शायद आपको करा दिया गया होगा, तो वो मैं क्विकली आपको सिर्फ दिखाऊंगा और कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा डीएफटी के, जिससे कि आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हो. सो दिस पार्ट इज एक्चुअली, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ क्वांटम थ्योरी, दिस पार्ट इज क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स. One thing is quantum mechanics, which we do as a general introductory course. Now here, this part is quantum mechanics of the material. We are trying to solve Schrodinger equation for materials which are having periodic arrangement of atoms. ठीक है? तो दूसरा लोगों ने कहा कि वो पोटेंशियल जो इवन सेल्युलर मेथड में भी है, वो भी बहुत ज्यादा ठीक तो नहीं है. इट इज एन इम्प्रूवमेंट, बट इट इज नॉट मच क्लोजर, और इट्स नॉट अ वेरी गुड डिपिक्शन ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल. ये सब डिस्कस किया है अगेन एशक्रॉफ्ट-मर्मिन. सो दिस इज, आई थिंक आप ये देख पा रहे होंगे, ये सेल्युलर मेथड ने जो पोटेंशियल दिया वो ये वाला था, ये जो आप देख पा रहे हो. दिस इज द पोटेंशियल ऑफ सेल्युलर मेथड. 1/r टाइप था ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल तो कंटिन्यूअस है बट डिसकंटिन्यूअस डेरिवेटिव है. यहाँ पे पॉजिटिव है, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे सडनली डिक्रीज करना शुरू हो गया. ये है आपका सेल्युलर मेथड का. However, actual crystal का पोटेंशियल ये वाला होता है, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ. I hope you can see. This is the actual crystal potential. Near, ये एटॉमिक न्यूक्लियाई है. Near to the atomic nucleus, it is 1/r type. मतलब वहां तो डाइवर्ज करेगा ये, बट इन बिटवीन ये ऐसे एक स्मूथली वेरिंग फंक्शन होता है, नॉट लाइक इस तरह से डिसकंटिन्यूअस डेरिवेटिव नहीं होते इसके. ठीक है? तो टू कम अप मच क्लोजर टू द realistic potential, people proposed the idea of muffin tin potential. Muffin tin potential में क्या किया लोगों ने, कहा कि एक काम करते हैं, पूरे क्रिस्टल को दो रीजन में बांट देते हैं. कोर रीजन, जिसको हम एटॉमिक रीजन भी कहते हैं, और दूसरा इंटरस्टिशियल रीजन. एंड पोटेंशियल कुछ इस तरह से. इंटरस्टिशियल रीजन में तो एक फिक्स्ड वैल्यू दे दी उसको, कांस्टेंट वैल्यू, और कोर रीजन में वो 1/r टाइप है, कूलम टाइप, इस तरह का दिखे. तो अगर आप इस पोटेंशियल को देखोगे, और ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, आई होप यू कैन सी यहाँ पे, तो ये फिर भी दिस इज मच बेटर डिपिक्शन ऑफ द पोटेंशियल फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल देन द दिस सेल्युलर मेथड पोटेंशियल. ठीक है? तो ये जो मफिन टिन पोटेंशियल है, बहुत सारे जितने भी कोड्स हैं, मोस्ट ऑफ द कोड्स नाउअडेज आर यूजिंग मफिन टिन पोटेंशियल्स फॉर पुटिंग इन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद न्यूक्लियाई इन ए क्रिस्टल. वहां पे मफिन टिन पोटेंशियल्स इस्तेमाल होते हैं. ठीक है? एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोटेंशियल्स. ये इसका यू कैन से रियल स्पेस में एक व्यू है 2D मटेरियल का. ये आपकी कोर रीजन है, इसके अंदर पोटेंशियल जो है 1/r टाइप है, और ये बाहर वाले इंटरस्टिशियल रीजन हैं, यहाँ पे आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है दिस टाइप. सो दिस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ मफिन टिन पोटेंशियल. ठीक है? समथिंग सिमिलर टू दिस. उसके बाद बहुत सारी और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स होती रही, जैसे कि ऑगमेंटेड प्लेन वेव मेथड. अगेन एशक्रॉफ्ट-मर्मिन की किताब में आप जाके देखिएगा इसको. ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि भाई कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, पर वो कनेक्टिविटी शायद मिस हो गई हो कभी, कि ये कहाँ पे काम आएंगे. तो यहाँ पे अब ये काम आ रहे हैं. तो वो सब मेथड्स अब आप वापस जाके अगर पढ़ेंगे, यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू अप्रिशिएट दीज मेथड्स. ठीक है? तो ये स्लेटर ने प्रपोज किया APW मेथड. आई एम नॉट गेटिंग इनटू अगेन डिटेल्स, बट बेसिक आइडिया यही था कि मफिन टिन पोटेंशियल का इस्तेमाल किया इन्होंने, और उसका इस्तेमाल करके श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी. ठीक है? कंपेयर किया वेव फंक्शन को मफिन टिन स्फीयर की बाउंड्रीज पे. अंदर जो है वो 1/r टाइप पोटेंशियल है, तो ये हाइड्रोजन लाइक, देखो स्फेरिकल हार्मोनिक्स, रेडियल पार्ट. बाहर कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो प्लेन वेव टाइप है वेव फंक्शन. दोनों वेव फंक्शन को मफिन टिन स्फीयर की बाउंड्री पे कंपेयर किया, और फिर कंपैरिजन से कुछ कांस्टेंट्स जो बने वो कैलकुलेट किए, एंड देन वी हैड वेव फंक्शन. वंस वी हैव वेव फंक्शन, वी कैन कैलकुलेट
physically measurable properties of the crystal like energy and many other things from this. So ये augmented plane wave method, इस तरह से आप जो है further improvisation है आपके periodic potential के साथ इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन का. Then linearized augmented plane wave method, काफी सारे कोड्स इसको इस्तेमाल करते हैं. क्वांटम एस्प्रेसो एक कोड है QE which uses APW, and there is a code called ELK which uses LAPW, linearized augmented plane wave method. Siesta also, I think it doesn't use plane wave, but ये block theorem and all, it uses those also. और basis क्या use करना है, whether it has to be plane wave or something else, तो वो Siesta uses some different other basis. It uses localized orbitals. So basis पे कभी कहानी I think शायद आपको थोड़ी बहुत तो सुनाई होगी during workshop, पर कभी डिटेल में मन करेगा तो बात करेंगे, समय मिलेगा तो, ठीक है. But yeah, this is how we take care of electron nuclei interaction. Now comes the next part, DFT part. I will quickly jump through this. अब जहां पे जो DFT पे ये वर्कशॉप है, तो DFT पार्ट कहां पे आया पिक्चर में, यहां पे. ये ओनली इस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ टू टेक केयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है. You would have gone through various approximations during this workshop. Hartree-Fock approximation, for example. बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें मैं नहीं जाऊँगा. हाँ, अगर आपके questions होंगे तो I can try to answer them. Then self-consistent field. How can we solve, many electron wave function self-consistently? Then you would have realized the significance of electron density in comparison to wave function. For example, if you have a simple molecule of carbon dioxide, its wave function is 66 dimensional function. क्यों? हमने क्या कहा था शुरू में? Wave function is a function of this. So carbon dioxide में क्या है भाई? एक कार्बन है, कार्बन में कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. ऑक्सीजन 2 हैं, so 2 into 8 कितने बने? 6 plus 10 कितना हुआ? 16. 6 plus 16. 6 plus 16 is 22 ना. 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके CO2 के सिस्टम में. Each electron has 3 degrees of freedom. So 22 into 3 कितना डायमेंशनल सिस्टम हो गया? 66 डायमेंशनल. वो भी कब? जब बॉर्न अपनीमर अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी लगा दी है. हम कार्बन के न्यूक्लियस और ऑक्सीजन के न्यूक्लियाई की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में भी आपका इस सिस्टम का वेव फंक्शन 66 डायमेंशनल फंक्शन होगा, which is really complex, complex and complicated, because एक 2 डायमेंशनल फंक्शन देखिए जिसमें एक वेरिएबल x, एक है y मान लो, तो क्या होगा? x की हर एक वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज होंगी. से x 0 है and y goes from 1 to 10. Suppose x and y both goes from 1 to 10. तो x equal to 0 के लिए y की 10 वैल्यूज आएंगी. 1, 2, 3, x 0 ही रहेगा. फिर x1 हुआ, y की फिर 10 वैल्यूज. x2 हुआ, y की फिर 10 वैल्यूज. इतनी सारी वैल्यूज और उसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है. दिस इज जस्ट वेव फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है, या 2 डायमेंशनल फंक्शन यदि है. इमेजिन ए फंक्शन विच इज 66 डायमेंशनल, तो कितना सारा डेटा होगा. इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डेटा एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डील विद. सिमिलरली अगर आप कोई और समथिंग लाइक 100 प्लैटिनम एटम्स का कोई क्लस्टर ले लेते हैं, 23,000 डायमेंशनल फंक्शन, उसका डेटा ही इतना होगा, वेव फंक्शन को स्टोर, वेव फंक्शन की वैल्यूज ही इतनी ज्यादा होगी इस तरह के केस के लिए कि उसको स्टोर कर पाना ही मुश्किल होगा. सॉल्व करना तो भूल जाओ. दैट इज व्हाई पीपल रियलाइज्ड कि भाई वेव फंक्शन की क्या जरूरत भी है. और जरूरत बाद में लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं यार, वेव फंक्शन की एज सच तो कोई हमें डायरेक्ट नेसेसिटी तो नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी काम चला सकते हैं. दैट्स वेयर डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी का डेंसिटी कम्स इनटू पिक्चर. एंड दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय होनबर्ग एंड कोहन. आई थिंक ये आपने सुना होगा डिटेल में, तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूं. होनबर्ग कोहन थ्योरम्स आपने पढ़ी होंगी कि किस तरह से उन्होंने सारी कहानी को, जो कि वेव फंक्शन की टर्म्स में लिखी गई थी. भाई इससे पहले हमने क्या कहा कि भाई एनर्जी कैसे निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में? एनर्जी इज इक्वल टू psi स्टार h कैप
साई ऑफ कोर्स इंटीग्रल डी क्यूब आर, अगर 3D सिस्टम है साई स्टार साई डी क्यूब आर, यही होती है एनर्जी। सो एनर्जी हम यहां से देख सकते हैं, इट इज ए फंक्शनल ऑफ वेव फंक्शन। एनर्जी इज ए फंक्शनल। अब डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी का फंक्शनल पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, मुझे उम्मीद है कि फंक्शनल पे भी बीच में बात हुई होगी आपकी। तो एनर्जी इज ए फंक्शनल ऑफ वेव फंक्शन, पर वो जो वेव फंक्शन है जिसका ये एनर्जी फंक्शनल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स, समथिंग लाइक 66 डायमेंशनल फंक्शन है। तो ये जो इंटीग्रल है आपका, ये 66 डायमेंशनल इंटीग्रल होगा। 1D इंटीग्रल सॉल्व किया होगा आपने, 2D इंटीग्रल सॉल्व किया होगा जहां dx dy आएगा। Imagine a 66 dimensional integral, which is going to be really complicated and almost impossible to do. तो लोगों ने कहा कि भाई अच्छा वेव फंक्शन से काम नहीं कर सकते, तो हॉर्नबर्ग ने क्या कहा कि भाई एनर्जी जैसे कि आपका फंक्शनल है वेव फंक्शन का, इसका एक और इक्विवेलेंट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, वेयर एनर्जी कैन बी रिटन एज ए फंक्शनल ऑफ डेंसिटी ओनली। अब वेव फंक्शन और डेंसिटी में क्या फर्क हो गया कि भाई डेंसिटी इज जस्ट ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, तो आपको मैक्सिमम 3D इंटीग्रल सॉल्व करने होंगे, which we can easily manage. So density functional theory का great aspect क्या है कि भाई आप एनर्जी को वेव फंक्शन के फंक्शनल की बजाय डेंसिटी के फंक्शनल की टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। एंड देयर इज ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन, ये सब आपको पढ़ा ही होगा आपने। So ये है आपका वो फंक्शनल फॉर्म, ये एनर्जी नाउ बीइंग रिटन एज ए फंक्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड ऑफ कोर्स एक्सटर्नल पोटेंशियल व्हिच इलेक्ट्रॉन्स फील। ये देखो काइनेटिक एनर्जी भी आपका डेंसिटी का फंक्शनल बनता है। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ए फंक्शनल ऑफ डेंसिटी। तो अब काइनेटिक एनर्जी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे फिर कि भाई -h×2m del I स्क्वायर से निकाल लो, नहीं, वहां से आप ऑर्बिटल्स निकालोगे, कोनशाम ऑर्बिटल्स जिनको हम कहते हैं। वंस यू हैव कोनशाम ऑर्बिटल्स, फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी phi star, राइट। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो एनर्जीज आप फंक्शनल्स जो भी रिस्पेक्टिव हैं उनसे आप निकाल सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन फंक्शनल्स आते हैं, डिफरेंट फंक्शनल्स आर देयर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द टोटल एनर्जी। तो ये इस फॉर्मुलिज्म का ग्रेटर पार्ट है या ये इसकी अचीवमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कोनशाम इक्वेशन सेल्फ कंसिस्टेंटली। यू कम अक्रॉस LDA GGA, मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों ने आपको LDA GGA के बारे में भी बताया होगा, इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट ये आई थिंक दिस स्टफ इज देयर इन ए बुक बाय ग्रोसो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और कंडीशनल फिजिक्स बाय ग्रोसो, उससे आप ये देख सकते हो, बहुत डिटेल में उसमें दिया हुआ एक चैप्टर है। नाउ कम्स बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म करना है तो मैग्नेटिज्म DFT में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्पिन डिपेंडेंट एक्सचेंज कोरिलेशन। कहीं आपको एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल की भी बात हुई होगी, मुझे उम्मीद है। तो यस, बहुत सारी चीजें फिर आप कर सकते हो। तो ये है क्वांटम थ्योरी ऑफ मटेरियल्स कि भाई दो पार्ट हैं मटेरियल्स को। पहली बात की क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और क्वांटम मैकेनिकली सॉल्यूशन के लिए देयर आर 2 कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायरिंग आवर अटेंशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन के लिए डिफरेंट मॉडल्स जो हमने बात किया, ब्लॉक थ्योरम, APW ऑगमेंटेड प्लेन वेव मेथड, लीनियराइज्ड ऑगमेंटेड प्लेन वेव मेथड, ये सब यूज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के लिए आप डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी का इस्तेमाल करते हो। उससे करके हम मटेरियल की बहुत सारी रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेशंस हैं, आई थिंक ये शायद आपने करी होंगी वर्कशॉप के दौरान, कुछ टॉय कैलकुलेशंस यूजुअली हम करते हैं। जैसे कोई मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, वो कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। तो अब जब आपके पास वेव फंक्शन आ गया, टोटल एनर्जी आप किसी मटेरियल की कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहां से आप ये बता सकते हो कि भाई कौन से स्ट्रक्चर में वो स्टेबल होना चाहिए। एल्यूमिनियम नेचर में हमें पता है FCC में एग्जिस्ट करता है, बट अगर आप देखेंगे तो कैसे, मतलब हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई डज एल्यूमिनियम एग्जिस्ट इन FCC स्ट्रक्चर। तो अगर आप टोटल एनर्जी वर्सेस लैटिस कांस्टेंट कैलकुलेट करें एल्यूमिनियम का, DFT, this can be a homework for every one of you who are leaving this workshop now after this. So you can try to calculate total energy versus lattice constant for aluminum in say simple cubic structure. This is simple cubic data. Then this is BCC, aluminum BCC, aluminum FCC. आप ये देखेंगे overall
FCC स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम की एनर्जी लोएस्ट है. So that is why aluminum prefer to go in FCC structure. And what is the corresponding lattice constant? This is the value of the lattice constant for aluminum in FCC structure. Okay. You can calculate many other properties. बहुत सारे लोग कहते हैं कि DFT तो भाई 0 केल्विन वाली थ्योरी है, 0 केल्विन पे ही आप प्रॉपर्टीज कर सकते हो. ऐसा नहीं है. बहुत सारी स्मार्ट अप्रोक्सीमेशंस और मेथड्स का इस्तेमाल करके आप 0 केल्विन को रेफरेंस लेके आप फाइनाइट टेम्परेचर प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द कैलकुलेशन डन विद द हेल्प ऑफ DFT. ये स्पेसिफिक हीट हमने कैलकुलेट करी है एल्यूमिनियम के लिए. और ये देखिए आपने डिबाई मॉडल पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट का. ऐसी जाती है ना वहां पे स्पेसिफिक हीट, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज योर डुलोंग पेटिट लिमिट. यू कैन सी दिस इज द डुलोंग पेटिट लिमिट. 25 आती है डुलोंग पेटिट लिमिट, जूल पर मोल पर केल्विन पर एटम. ठीक है. सो ये DFT से निकाला गया है एंड इट कैन टेल यू इवन बेटर देन डिबाई मॉडल. डिबाई मॉडल भी बहुत एक अप्रोक्सीमेशन है वहां पे. ठीक है. पर DFT से आप एटॉमिक वाइब्रेशंस, फोनोन्स कैलकुलेट कर सकते हो और फोनोन्स कैलकुलेट करके फाइनाइट टेम्परेचर प्रॉपर्टीज भी आप कैलकुलेट करके दे सकते हो, जो कि डायरेक्टली कोई एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो कि करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट जो करी है आपने उनसे मैच करा सकते हैं इनको. या आप डायरेक्टली एक कंप्यूटर की सहायता से सिंपली वो चीज करके दे सकते हो जो बहुत करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके किसी को मेजरमेंट करने में लगेंगे. ठीक है. यू कैन टॉक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक, HC हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स. दिस इज ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर डन यूजिंग DFT, है ना. तो इस पे कभी डिटेल में बात करेंगे. बैंड स्ट्रक्चर, फैट बैंड्स, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं. मैग्नेटिक सिस्टम्स, आयरन जो है वो BCC होता है तो फेरोमैग्नेटिक में ही क्यों स्टेबल होता है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आयरन के लिए कैलकुलेशंस की गई हैं. ये एंटी फेरोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर, एंटी मींस एक आयरन अप स्पिन के साथ है, नेबरिंग डाउन स्पिन, अप डाउन. ये एंटी फेरोमैग्नेटिक अरेंजमेंट होगा. आयरन को ये नॉन मैग्नेटिक में किया हमने, स्पिन ऑफ कर दी, स्पिन पोलराइजेशन फॉल्स कर दिया. मतलब हमने स्पिन डिपेंडेंट डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी नहीं करी, स्पिन को फॉल्स करके और ये मान लिया कि दोनों स्पिन सेम एनर्जी रखते हैं, डीजनरेट है स्पिन, तो ये एनर्जी आएगी. पर आप देखोगे फेरो में करते हो तो आपकी लोएस्ट एनर्जी आ रही है. दैट इज व्हाई आयरन मैग्नेटिकली फेरोमैग्नेटिक स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैटिस कांस्टेंट. ये जैसे स्पिन डिपेंडेंट बैंड स्ट्रक्चर आप कैलकुलेट कर सकते हो, अप स्पिन डाउन स्पिन का. ठीक है. दिस कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली एज वेल और कंपैरिजन कर सकते हो आप with experimental techniques like spin resolved photoemission spectroscopy. Spin resolved, angle resolved, spin भी और angle भी. I mean ये experimental कुछ नाम है, कभी इस पे मौका मिले तो बात करेंगे डिटेल में. But yes, you can try to read about ARPES, angle resolved photoemission spectroscopy. वहाँ से आप band structure measure करते हो experimentally. Then you can resolve spin also. तो यू कैन से स्पिन रिजॉल्व, एंगल रिजॉल्व फोटोमेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो वहां से आपका ये आएगा और वो सेटअप जो है आई थिंक इट वुड कॉस्ट यू 2-3 करोड़ आई थिंक एटलीस्ट. पता नहीं, मतलब बहुत कम प्राइस में तो नहीं मिलेगा. बट हाँ DFT में आप सिंपल एक कोड अपने लैपटॉप पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्पिन रिजॉल्व बैंड स्ट्रक्चर. ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं. सो आई वोंट बी टॉकिंग मच अबाउट द थिंग्स बिकॉज टाइम इज ओवर. So if there is any question, yes, please let me know. Any question, please? I am actually just binding up my talk. Hello. Any question? Yes, any question, please? I hope the talk was informative. If there is any question, I will be happy to answer. I think there is no question. Professor Aluwalia sir is also there. So Oh, great. I want, if he is there, then he may say few words regarding your talk. Okay, I am here, and you can see me walking also. You know, when I was listening to lecture, I was walking around in my house. I think Jagdish
Hello. Yes, sir. Well, Yes. wonderful, Good morning, sir. You are audible. Okay. It was a wonderful quick review of the DFT theory. I think you took the participants from how it emerged from pre-electron model to chronic Pauli model, then the other approximations which came till we reached DFT, which has become an indispensable tool in the hands of both chemists and physicists. And they are doing very interesting work with the help of these. Now, I just want to say one thing to the participants, and that is that it is very easy to learn how to run code. But what is happening inside the code, that should also be known to you. And normally, you know, when we start doing calculations, and once the calculation is running, what we need to do is we must go back to the basics and try to understand what are the approximations which are going into it, and start asking questions. You must have seen that here we are talking about density functional. Now, what is the implication of using the term functional here? And how different type of possible calculations are done with the help of this theory. And this theory took almost 30 to 35 years to develop. And from early 90s, you know, DFT codes started emerging. People started doing these calculations in different disciplines, I would say, in zoology, in medicine, in drugs designing, in chemistry and physics. We were already doing these calculations quite a bit. And you will also appreciate one thing more, which is that in these approximations, people very intelligently, you know, went from a stage where problem looked almost unsurmountable to when we were able to solve it. And the real success story is that we went from many dimensional problem to just a three-dimensional problem using the idea of electron density. And its seeds were already there, you know. I also mentioned in my lecture in Thomas Fermi model, when this was used to anticipate the atomic structure of heavy elements. Now, this workshop was a good way of getting grasp of those things and those tools which are needed for doing good work. My suggestion will be that you should not just forget the things which have been done here, but must try to build up upon those. So I think this is just great, and I would have been very happy if Dr. Jagdish had been able to come to Bilaspur and interact with the students. He is a wonderful communicator, you must have observed also, and makes things very, very simple when explaining. So thank you, Jagdish, for coming all the way on the internet waves and interacting with the participants. Thank you, Arun. Good, Thank you, sir. good attempt. Thank you, sir. I thank Professor Ahluwalia for motivating us and summing up the lecture. I also thank Dr. Jagdish from the core of my heart that on my short notice he was ready to deliver his talk, and it's just a complete overview of the whole of the quantum mechanics and how quantum mechanics help us to determine the properties of the various materials. So with this, I close this session. Now tea is waiting for us. So, and after tea session, The recording has stopped. after tea session. Okay, sir. Thank you. I am now leaving.
the meeting. Huh? Pardon, sir? Thank you. I am leaving now. Thank you very much. Yeah, I think okay, I will Dr. leave. Jagdish. Oh, thank you. So after tea session, there is a hands-on session on siesta, which we left yesterday, and after that, let us meet as soon as possible. Try to meet.